इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम पेशरफ सामने आई है। जनरल फैज हमीद, ब्रिगेडियर इरफान रामे और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड अनवर कासी के तहरीरी जवाबात के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला महफूज कर लिया है और समाअत के दौरान उठाए गए सवालात पर तमाम फरीकैन को 3 हफ्ते के अंदर मुख्तसर जवाबात जमा कराने की हिदायत कर दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना आखिरी फैसला सुनाएगी। आज की समाअत के दौरान जो अहम कानूनी नकात उठे हैं उनमें सबसे अहम नुकता यह था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जनरल फैज हमीद और दीगर पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जनरल फैज हमीद समेत अफसरान और ओहदेदारान इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में क्या किया जाए, सच कौन बोल रहा है, इसकी तहकीकात कैसे की जाए। आज जब सबसे पहले ये मामला उठे तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने अदालत को बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऑर्डर को कलअदम करार दिया जाए क्योंकि इस ऑर्डर में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तहकीकात ही नहीं की गई। और हामिद खान के इस नुक्ते पर अटॉर्नी जनरल के माविन ने भी इत्तफाक किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने हामिद खान से सवाल किया कि अगर इंक्वायरी के बाद ये साबित होता है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने गलत इल्ज़ामात लगाए हैं तो फिर क्या होगा। तो हामिद खान ने जवाब दिया कि फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी ठीक होगी। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इस हवाले से इंक्वायरी कौन करेगा, कि इस मामले को दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जा सकता है। तो हामिद खान ने जवाब दिया कि जी, इस मामले को दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जा सकता है। How do we proceed further? How would you plead your case now? What should we do if we just want to hear your point of view on this? It's a simple case where the whole order should be quashed because it was based upon a report which was not based upon inquiry. So what they needed to do is inquire into the matter. How should they inquire into the matter? By holding a factual inquiry on the allegations that were there. Was any factual inquiry held? Never. Yeah, That's my private. This is an admitted fact. It's a fact. Where is it? Is this admitted fact? Is this true or false? Oh my lord, उनकी allegation की नहीं की गई जो कि नहीं, बस ये पूछ रहे हैं. It's being conceded by the Attorney General that there was no factual inquiry. Okay. Now, moving ahead, what can we do? Declaring the inquiry, the report of the Supreme Judicial Council as unconstitutional, void. The allegation that you make now, yes, is established to be false after the inquiry. After the inquiry, yes. Should you have been removed? Then can be yes. Okay. And then that No. Now I reverse it. Yeah. If after inquiry it transpires that the allegation that you leveled was true, yes, they may say you still should be removed because you went public, or no, you should not be, but your emphasis is on the fact that one way or the other inquire into the matter. Am I correct in understanding that? Now because you had leveled initially allegations without making anyone a party, so we wanted to hear what the persons against whom the allegations had been made, what would they say. They may come and say, yes, I did so, but there was nothing wrong in it, or simply say, yes, I did it. But the matter can't end now because they are saying, no, this is all false. So who will ascertain the truth of the matter? The Supreme Judicial Council ought to have done that. My position is now your lordship is जरा मैं solution भी बता देना साथ. We're looking for how to solve this riddle. इसका simple जवाब है सर. Solution ये है सर कि let this order of the president and the report may kindly be quashed and a commission may be appointed to ascertain the truth. How, under what law will we do that? This honorable court can always do so. No, they can ascertain the truth about the matter. No, it can't be remanded to the Supreme Judicial Council. Sir, is that a possibility or it's not? It can be yes. It can be yes. इसके बाद जब जनरल फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे के वकील ख्वाजा हारिस से इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस नहीं भेजा जा सकता। शौकत अजीज सिद्दीकी को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर निकाला गया है और अगर सुप्रीम कोर्ट यह करार देती है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने तकरीर करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की तो इससे यह बात साबित नहीं होगी कि उन्होंने जनरल फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो दुरुस्त हैं, बल्कि सिर्फ
शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का मामला हल होगा, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आप नहीं जानना चाहते कि इस मामले के पीछे क्या हकाइक हैं, कौन सच कह रहा है। तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ऐसा इस केस में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर खुद नोटिस ले सकती है या कोई और एक्शन कर सकती है। ख्वाजा साहब आप क्या कहते हैं इस पॉइंट पे? नहीं, लेट्स सी, ख्वाजा साहब इज senior counsel, let's see what his view is. Can we remand the matter to the Supreme Judicial Council or we can't? My Lord, may I very humbly make a submission? It cannot be done because now there is nothing for the Supreme Judicial Council to inquire into, because the petitioner's tenure has already expired. He is no longer, it goes back, he would no longer be a judge to be considered for purposes of removal, which is the function of the Supreme Judicial Council. So it does not fall within the functions of the Supreme Judicial Council at this stage. This is what my very humble submission. So what is the solution? None? This matter requires the determination or No, not? let's suppose we, for sake of argument, don't take it amiss, that we set aside the order. Your Lordship. That means that that's implied in the order that all that he said, the judge, when he was a judge, was true. So you are condemned. Won't you be condemned? It doesn't imply that, my Lord. Why? May I very Then humbly he'll say everything I said was true, therefore the order was set aside. Yes. What he said, my Lord, so far as the allegations against specific persons are concerned, they came up for the first time before the Supreme Judicial Council. No, he's been saying it from day one. No, he hasn't. He hasn't. The specific allegations against persons, by naming them and naming the incidents also, they never figured in the speech. They never figured in the preliminary reply that was given to the Supreme Judicial Council. It was in the second reply, that the additional reply that... No, but one way or the other, why didn't the Supreme Judicial Council say something on it? They could have asked him, say it on oath. Yes. What did the Supreme... I don't know, I called you to cross-examine him. I don't know, whatever way. I'll make a submission. What the Supreme Judicial Council did was, they asked for the then Chief Justice of Islamabad High Court for his reply on the allegations that were made by the petitioner vis-a-vis him. And he denied all those allegations. But it's one denial, I'm just making one assertion. Yeah. No, but more importantly, may I make a submission? I'd said that before also, and I'm trying to be as balanced. See, you can't just say because he's Chief Justice, I believe him, and because he's a simple judge, I disbelieve him. The sole ground on which the matter against the petitioner could have been sustained, this order can be sustained, is if this honorable court comes to the conclusion that that speech per se was sufficient for his removal because it came within the definition of misconduct. Are you suggesting a judge cannot give a speech to a bar counsel? No. What I'm making a submission. May I make a mistake? Irrespective of whether it was true or not what the petitioner said, irrespective of that, because it maligned the judiciary as a whole. How does it malign the judiciary? Let's go through the speech itself, if your lordship would. No, and it maligned the Army Institute, the armed forces. He is maligning you. No, not in the speech. In the speech, it is the armed forces, it is the judiciary. They are the judges of the Islamabad High Court. Suppose the allegations are true, then what will happen? Even then, the petitioner should not have gone public or made a speech before the bar. Why? He could have issued a contempt notice. No, why are you saying he should not? Unless you can specify some violation of some law, constitutional provision. The code of conduct says something to... No, we refer to that provision, which says that judge cannot give a speech to the bar counsel or whatever. It's not a question of giving a speech, it is a question of giving a speech which maligns the judiciary. Exactly, it's the contents of the speech. Or which maligns any institution in the country. That is... Okay, now let us... Only that has to be held. And this is for this honorable court to decide whether that speech, irrespective of whether it is based on truth or otherwise, comes up to that standard of falls within this mischief or not. That is all. As far as the inquiry part is concerned, that did not take place. So they were, and those specific allegations are not there in the speech. The order itself, when we read page 7, we read the conclusion, it is basically focused on the speech itself, which is said to be the reason why the removal is being ordered. This honorable bench comes to the conclusion that in this matter, irrespective of the contents of the inquiry itself, the speech itself, and that it was made publicly addressed to a bar association, which was then, this is fine, this is all right, this does not amount to misconduct, then the order that this honorable court has to pass, the way to move forward, is to exonerate him of the charges of making a speech which does not come within the ambit of misconduct. It does not imply
that whatever he said was true. This particular list would come to an end with the petitioner being exonerated of the charges, the order being set aside, the recommendation being quashed, and he gets whatever he gets. As a senior lawyer, would you not want to know the truth of the matter, that the petitioner is telling the truth or your client is telling the truth? Just as you have invested your life in this profession. Yes, would you not want to know the truth of the matter? This is exactly what I'm saying. I am with your lordship on that. So how will you get to it? What I'm saying is that not in this list, not in the case before So how your do we lordship, do it? Then your lordship takes suo motu action or takes some other action by not. अहम बात यह है कि ख्वाजा हारिस ने यह तस्लीम भी किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात पर कोई इंक्वायरी नहीं की। फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, जनरल फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे के वकला को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अटॉर्नी जनरल को भी सुना, जिन्होंने अदालत को जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन के 2 रुकनी बेंच के एक फैसले का हवाला दिया और कहा कि इस फैसले में करार दिया गया था कि अगर जज रिटायर हो गया या इस्तीफ़ा दे दे तो इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि इस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने अपील दायर की है, उस अपील को इस केस के साथ लगाया जाए और मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजने से मुताल्लिक कुछ रुकावटों को अगर दूर करना है तो 2 रुकनी बेंच के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट को कलअदम करार देना होगा। इस केस की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना तहरीरी हुक्मनामा लिखवाया, जिसके मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे को नोटिस दिया गया। ख्वाजा हारिस पेश हुए और इल्ज़ामात पर जवाब जमा कराए। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना जवाब जमा कराया। साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ ने भी जवाब जमा कराया। हमने एडवोकेट हामिद खान को भी सुना और अटॉर्नी जनरल को भी सुना। अदालती कार्रवाई में उठाए गए सवालात पर फरीक़ैन तहरीरी जवाब जमा कराएं। हुक्मनामे के मुताबिक क्या इस केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी की? अगर इंक्वायरी आईन और कानून के तहत नहीं हुई तो इसका क्या नतीजा होगा? शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 30 जून 2021 को 62 साल थी। अब शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील मंजूर हुई तो क्या रिलीफ दिया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मामला दोबारा भेज सकती है? काउंसिल कार्रवाई की जरूरत नहीं तो क्या जज की तकरीर बजाते खुद कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं? फरीक़ैन इन तमाम सवालात का 3 हफ्तों में जवाब जमा कराएं और अगर ज़रूरत समझी गई तो मज़ीद अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। यानी 3 हफ्तों के अंदर तमाम फरीक़ैन को जवाब जमा कराने हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना महफूज फैसला सुनाएगी। अहम बात यह है कि जनरल फैज़ हमीद ने शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है, मगर इस हवाले से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने द न्यूज़ कैरियर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से बात करते हुए दावा किया है कि उनके पास मुलाकात के शवाहिद हैं। वो मुलाकातें जनरल फैज़ हमीद ने शौकत अजीज सिद्दीकी से उनके घर पर की थी।